Hello students, hope you all are doing well. Today we are going to start the sixth chapter of your science subject, that is life processes, and it happens to be the first chapter of your biology section. I hope you all have already gone through assignment number 1 and assignment number 2 of the same chapter, and if you have gone through that, you already know that in this chapter, we are going to study about 4 different life processes which are very critical. Number 1 is nutrition, second one is transportation, then respiration, and finally excretion. So these are basically 6 different aspects of life of any organism. Okay, and these 4 life processes carries are being carried out by any organism continuously. So all of these run simultaneously in an organism, whether it is a unicellular organism or a multicellular organism, whether it is a plant or an animal or a bacteria, anything. Very well. Now with that, you also know that for any life form to sustain, energy is required, as well as for its proper growth and development, raw materials are required. Now these raw materials are the building blocks. Okay. Now the way any organism or the process by which any organism obtains the raw materials and the energy from its environment is called nutrition. Okay. Now, most often, they obtain it in the form of food, which contains energy-rich organic compounds, which are complex organic compounds, which provide them both energy and the raw materials. Okay. Now, on the basis of how they obtain this nutrition is of 2 types. Number 1 is autotrophic nutrition, which you can see here. So there are 2 different types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Okay. As I always tell you, in biology, if you want to master the terms, you do not have to remember them. Rather, you have to look closely and try to split them into different terms, such as here the autotrophic can be split into 2 terms, that is auto and trophic. Very well. Now auto means self and trophic means food. So this term is self-explanatory. So it means that autotrophic nutrition is a type in which organism prepares its own food. Okay, own food. So they are going to prepare their own food from inorganic sources. And what are these inorganic sources? Mainly CO2 and water. Okay. So autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organism is preparing its own food from inorganic sources like CO2 and water. Now for this, obviously they require energy, which they obtain from sunlight or from chemical energy. We will see later when we will be talking about nutrition in plants, which will be basically discussed after this section. Well, all the organisms which show autotrophic nutrition are called autotrophs. Okay, and what are these? These are plants and some bacteria. Some bacteria, mainly blue-green algae, like you must have learned about nostoc, Anabaena, Oscillatoria, etc. Okay, they also do the nitrogen fixation, so you have studied them in your previous classes when you were studying nitrogen cycle. Well, so this is autotrophic nutrition. Let's move to the heterotrophic nutrition. As I said, again, try to split this term, hetero and trophic. So hetero means other or different, and trophic means food. So this is the type of nutrition in which organism obtains and utilizes food prepared by others.
So they are not going to prepare their own food. Rather, they are going to be dependent on others for their food. Okay, such as we do not make our food. We are dependent on plants and animals, depending on whether we are herbivore, we are vegetarian or non-vegetarian. Okay, and all such organisms which show heterotrophic nutrition are combinedly called heterotrophs. What are the examples? Example: all animals, fungi without exception, some bacteria like bacteria except blue-green algae and other chemoautotrophs, and protozoa. Okay, I hope you remember these from your class 9 biology lessons very well. So let's dive into and see uh, nutrition in plants. In this section we will be mainly talking about autotrophic nutrition. Okay, let me tell you that what we are studying here is one mode of autotrophic nutrition. Apart from this, there are other modes which we study in higher classes in terms of chemoautotrophs. Okay, very well. So let's go through. Now, plants are mainly autotrophic in nature, so they show autotrophic nutrition and they prepare their own food from carbon dioxide and water, and this process is called photosynthesis. Okay, so let's see what photosynthesis is in a bit more detail. Again, look at the term. This term is made up of two parts, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to make or to prepare. Okay, so what is photosynthesis? It is defined as the process by which autotrophs prepare their own food from inorganic sources such as carbon dioxide and water in the presence of sunlight by the help of chlorophyll. Okay, great. So if we try to understand here, the raw material for photosynthesis is CO2 and water. So these are the ingredients from which plant is going to make its own food or carry out photosynthesis. So raw materials are CO2 and H2O. What is the role of sunlight? Now, sunlight is the energy source. You know, for anything or any process, energy is required. So for this process of photosynthesis, that is in order to convert CO2 and water into glucose, energy is required, and this energy is given by sunlight. Very well. Now, if sunlight is falling on the plant and plant has to do photosynthesis, they have to first absorb or trap this energy, trap this sunlight or solar energy, and this is being done by chlorophyll molecules, right? I hope you remember chlorophyll is a green colored pigment which is present in plants, and apart from imparting green color to the plants, इसका एक दूसरा भी function है, and that is to trap sunlight, and this is the main function of chlorophyll. Okay, imparting green color is the secondary function. Okay, great. Now let's see how it happens. What are the steps? Okay, so the events or steps of photosynthesis. The first event is absorption of light. Okay, so light energy is being absorbed or trapped by the chlorophyll. Then what happens is conversion of this absorbed energy into chemical energy. Okay, so this light energy is then converted into chemical energy in the form of ATP, remember, and NADPH. Okay, well, let me tell you key. The solar energy is converted into chemical energy ATP and NADPH, where NADPH has energy but it is used as a reducing equivalent. This we will study later, maybe in 11th or 12th class. Great. So basically you have to remember that light energy is converted into ATP and NADPH. These two forms will be required by the plant for the later processes of the photosynthesis. Okay, now in the due course, when the light energy is converted into ATP and NADPH,
there is another reaction that happens, and this reaction is a splitting of water molecules. So water is being splitted, or split means to break down, or the water is broken down into hydrogen ions, that is protons, and oxygen molecules. These oxygen molecules then combine to form O2 molecules in the form of gas, and this O2 gas is a byproduct. This O2 gas is the byproduct for the plants, which is then released from the leaf or from the plant through the stomata. And that's why we say plants give us oxygen. Okay. So the main thing to remember here or to notice here is this oxygen, which is released as a byproduct from the plants, comes from water. Okay, remember, this does not comes from carbon dioxide. Okay, it always comes from water through a process called splitting of water, or there is another word for this called photolysis of water. Okay, photolysis, because again photo means light and lysis means to break. So here water is broken down in presence of light, and oxygen is released. Okay, that's why photolysis. Okay, so far what we have seen, or what are the events that we have covered in photosynthesis, is light is absorbed by the chlorophyll, and then this light is converted into ATP and NADPH, and in the due course the water is splitted and oxygen is released into the in the atmosphere. Okay, then what happens is the plant uses this chemical form of energy, ATP and NADPH, to reduce CO2 into glucose. Okay, let me tell you, glucose is the food molecule. So in the photosynthesis, glucose is the final product that is formed. So we started from the light and glucose is formed. So the process is complete. So these are the three main events during photosynthesis. This can be represented in the form of chemical reaction, and the reaction is as shown below. 6 CO2 molecules, 6 carbon dioxide, 12 water molecules combine to form one glucose molecule, that is C6H12O6, plus 6 water molecules and 6 oxygen molecules are released in the atmosphere. For this, energy comes from sunlight, which is trapped with the help of chlorophyll. Okay, so if there is no sunlight and chlorophyll, the CO2 and H2O cannot be converted into glucose. Okay, so what we have to understand from this whole equation is there are these 4 things which are very, very crucial for photosynthesis. One is carbon dioxide, second one is water, sunlight, and chlorophyll. If any one of them is absent, photosynthesis is not going to happen. Okay, and the plant will starve. Very well. So now we have understand the process of photosynthesis. Let's see where this photosynthesis happen. What is the site? Okay, तो photosynthesis होता कहाँ है? Photosynthesis होता है in all green parts of a plant, in all green parts. Okay, whether it is leaf or a stem or fruit or sepals, which is part of flower, anything that is green, उसमें photosynthesis होता है. But mainly कहाँ होता है? Mainly it happens in leaves. Okay, now the question that you can ask is, leaf में कहाँ होता है, right? So inside leaf, it happens in a cell organelle called chloroplast of mesophyll cells. Okay, so I hope you remember from your previous class what chloroplast is, which is a cell organelle, but I'm sure you have wondering what is mesophyll cells. Well, to understand this, let's look at
the leaf anatomy and try to understand. See, this is the anatomy of a leaf. As you see, this is a twig having 4 leaves. When we take a leaf, like leaf is a dorso-ventrally flat, right? It's a flat surface. When you see cut a cross section, so here through the thickness of the leaf, if you go through and put it under the microscope and see, what you will find, leaf is made up of this kind of structure. What is there? The upper layer is covered by a waxy material. It is non-cellular, it is a waxy material. It is like a wax coating. That is called cuticle. So it is made up of wax-like material. It is waxy. Secondly, just down the cuticle, you find the cellular layer called epidermis. Okay, and since it is present on the dorsal side of the leaf, we call it upper epidermis. Okay, a similar layer is also present on the lower end. So this lower end, this layer is called lower epidermis. Okay, now see, obviously this is the thickness of the leaf. Assume we have put it under microscope, तो ये बहुत magnify हो गया. So this is the boundary of the thickness. So this upper layer is upper epidermis, lower is the lower epidermis. ठीक है, और इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी एक पतली सी फिल्म है, पतली सी एक लेयर है वैक्सी मटेरियल की, दैट वी कॉल क्यूटिकल. ऑन द लोअर एपिडर्मिस there is no such layer called cuticle. Okay, the cuticle is only present on the upper epidermis. Fine, great. Now beneath the upper epidermis there are these cells. Can you see these cells, which are long columnar cells? This is called palisade cells, or this is also known as palisade mesophyll. This is also known as palisade mesophyll. Okay, now once these columnar cells or palisade mesophyll is done, beneath this layer you find these circular cells. Can you see? Now these circular cells are called spongy mesophyll. These are called spongy mesophyll. Now both this palisade mesophyll and spongy mesophylls are collectively called only mesophyll. Am I right? See, so there are two types of mesophyll cells. One is palisade and second one is spongy. What is unique about palisade? Palisades are columnar and they are attached to the upper epidermis. Okay, whereas जो spongy mesophylls होते हैं, these are round cells which are present between the palisade mesophyll and the lower epidermis. Okay, इन दोनों के बीच में. Okay, now the mesophyll cells. Okay, there is another difference between palisade and spongy, and that is palisades are tightly packed. Can you see? ये जो palisade mesophyll के cells हैं, they are tightly packed, cluster में है. But the spongy mesophylls are not that tightly packed, and there is a lot of air gap. Can you see this air gap? There is air gap, air gaps, air gaps, right? So there is a lot of intercellular space and gaps. Those are called air gaps or air sacs present in between the mesophyll cells, right? Okay, apart from this, if you see this leaf anatomy, within this layer there is a unique arrangement of cells, and this is called the vascular bundles. And what is this vascular bundle? This is nothing but a bundle which contains xylem and phloem. Right, so there is xylem bundle and phloem bundle, and as you know, xylem will carry water and minerals from the root up to the leaf, while phloem is going to carry
the food particles and hormones from leaf to rest of the plant. Okay, so these are like transport channels. Vascular bundle. So this is the area in which there will be xylem as well as phloem. So suppose there is a xylem, there will be phloem. So there will be xylem and phloem. So they present in bundles. And that's why हम इनको बोलते हैं vascular bundle. ठीक है, ये वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वैसे ही प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, राइट? इसीलिए इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल. वेरी वेल. So now when we have studied up or understood up to the spongy cells, spongy mesophyll, we reach the lower epidermis, right? And lower epidermis or even the upper epidermis, both are made up of a single layer of cells. ये एक layer of cells के बने हुए हैं, ठीक है? इसमें multiple layer नहीं होता है. Okay, great. Now in lower epidermis, specifically lower epidermis में ये जो लेयर है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, रादर देयर आर स्मॉल पोर्स हियर. देयर आर स्मॉल पोर्स जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा. क्या बोलते हैं? स्टोमाटा. एंड दिस स्टोमाटा इज एक्चुअली regulated by these two guard cells. ये क्या है? These are guard cells. Okay. So now can you see or can you admire the whole structure or the anatomy of leaf? So this is the upper surface which you see. This is called dorsal surface. The lower surface is called the ventral surface. Okay, dorsal and ventral. Dorsal surface का जो epidermis है that is called upper epidermis. जो ventral का है this is called lower epidermis. Upper epidermis के ऊपर एक waxy layer है that is called cuticle. और इस क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस के नीचे कॉल्यूमिनर सेल्स लगे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल्स. ओके, एक या दो लेयर या मैक्सिमम 3 लेयर में पैलिसेड मेसोफिल के सेल्स होते हैं, नॉट मोर देन दैट. और देन पैलिसेड मेसोफिल के नीचे जो पूरा का पूरा एरिया है इज फिल्ड विथ स्पॉन्जी मेसोफिल्स अप टू द lower epidermis. Okay, और इसी spongy mesophyll के बीच में you find vascular bundles. Now on the lower epidermis, the lower epidermis is not continuous, rather there are small pores here and there and these pores are called stomata. और ये pores बनाता कौन है? This is being made by the guard cells. Am I clear now? Great. Let us understand one more thing which is very crucial here. जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस हो, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. स्टूडेंट्स, आई एम एम्फसाइजिंग इट, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. सो दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ ग्रीन कलर, दे आर ट्रांसपेरेंट. ओके, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों के जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ओके, इट इज जस्ट दैट उनके नीचे वाली जो लेयर है मेसोफिल दैट हैज क्लोरोप्लास्ट, इट इज ग्रीन इन कलर, इसीलिए ओवरऑल जो लीफ है वो पूरा ग्रीन दिखता है. ठीक है. हाउएवर लोअर एपिडर्मिस के ये जो स्पेशल सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, दे आर ग्रीन एंड दे हैव क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, दे हैव क्लोरोफिल. ओके, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ओके, दैट upper epidermis, lower epidermis, any epidermal cells do not contain chlorophyll except guard cells. Okay, great. Now let us see in more detail a particular mesophyll cell. Okay, why mesophyll cell only? See, the reason is we are trying to study the site of photosynthesis. Okay, and we said the major site for photosynthesis is the leaf. Next question, being a curious student, I would ask कि leaf में कहाँ, right? And we know now that inside leaf the photosynthesis occurs in the mesophyll cells and not in any other cell, only in the mesophyll cells. Okay, सी लीफ में वैसे भी दो ही तरह के सेल्स हैं मेजरली,
पहला है एपिडर्मल सेल्स और दूसरे हैं मेसोफिल सेल्स, राइट। इसके अलावा भी कुछ सेल्स हैं, दैट इज वैस्कुलर बंडल के सेल्स एंड गार्ड सेल्स, बट वो इतने ज़्यादा नंबर में नहीं होते, सो आई एम इग्नोरिंग इट एज ऑफ नाउ, ओके। सो एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोफिल नहीं है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस तो वैसे भी नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? इन दी मेसोफिल सेल्स। अब मैंने आपको बताया कि मेसोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। तो आप बोलोगे क्या किसी एक में होता है या दोनों में होता है? I would say कि दोनों में होता है, in both palisade and spongy, but the primary or most of the photosynthesis occurs in the spongy mesophyll. ठीक है? So primary site for photosynthesis is spongy mesophyll. Am I clear? Great. When we see a particular mesophyll cell, what we find is there are these structures called chloroplast. There is a large central vacuole as we found it in typical plant cell, and this vacuole pushes the nucleus aside, and then there is this blue one is cell membrane and outer brown one is the cell wall. Great. I hope you all remember the structure of chloroplast from class 9th. If not, nothing to worry, we are going to revise it again here. So this is one chloroplast that we have zoomed out. ओके सी, एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो इसमें दो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर खाली जगह तो नहीं होगी, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ओके। नाउ दिस स्ट्रोमा कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दिस स्ट्रोमा ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे सी, दिस वन राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, कैन यू सी? This is one sac. Similarly, there is this another sac. Then there is this third sac. Oh, correct? Okay, and then there is sac. So there are many sacs. Correct? 1, 2, 3, 4, 5 sacs are there. Can you see? Yeah, this individual one sac. This one sac is called thylakoid, and these thylakoids are arranged one top of another, मेकिंग अ स्टैक। तो ये जो पूरा एक स्टैक है, दैट इज कॉल्ड ग्रैनम। दिस वन स्टैक इज कॉल्ड ग्रैनम। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितने भी ग्रैनम हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्राना, ओके। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रैनम एंड ग्राना। ग्रेट। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव नाउ realized and recalled the structure of chloroplast. Great. Let's see now. So we are saying that inside the mesophyll cells, the photosynthesis occurs only in the chloroplast and not in any other cell organelle. Okay. So my curious brain is going to ask question: is photosynthesis going to occur all through the chloroplast, or in different compartments, or all the steps of the photosynthesis are going to happen everywhere, or there is a compartmentalization? है ना, कैसे होता है? सारे स्टेप्स हर जगह होते हैं, या कुछ स्टेप्स यहाँ होगा, कुछ स्टेप्स वहाँ होगा, ऐसा कुछ फिक्स है? तो ये फिक्स है। सी, हमने बोला था आपको कि फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला was absorption of sunlight, second one was conversion of this light energy into the chemical energy, and third one was to reduce the CO2 into glucose. Okay. अब इन तीनों प्रोसेसेस को टेक्निकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड व्हाट आर these 2 parts? These 2 parts are light reaction and dark reaction. ओके। अगर आप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के टर्म्स में देखेंगे तो देखिए, फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में हो गया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। द लाइट रिएक्शन in which the chlorophyll is going to trap the light energy and convert it into ATP and NADPH, और साथ में आपका O2 गैस रिलीज होता है, that occurs in thylakoid. In thylakoid, remember? तो ये जो छोटे छोटे ग्रीन बैग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें होगा लाइट रिएक्शन, ओके, जिसपे कि लाइट पड़ेगी, एंड देन द क्लोरोफिल इनसाइड इट वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे इन द एटीपी, एंड इन द ड्यू प्रोसेस वाटर को स्प्लिट करेंगे टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस।
करेक्ट। नाउ हमने बोला था कि so this is the first two events. Now the third event is remaining, that is reduction of CO2 and water into glucose using this ATP and NADPH. वो कहाँ होगा? वो थाइलाकोइड में नहीं होगा, वो होगा स्ट्रोमा में, और इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ओके नाउ, तो आप बोलोगे कि ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, क्या डार्क रिएक्शन रात में होता है या इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होता है? नो, प्लीज स्टूडेंट्स मेक अ नोट अगेन दैट लाइट रिएक्शन ऑब्वियसली हमेशा दिन में होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। ठीक है, इसका नाम पड़ा लाइट रिएक्शन क्योंकि इट रिक्वायर्स सोलर एनर्जी। ठीक है, तभी तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके ना, सेकंड इज डार्क रिएक्शन। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये रात में होगा, ये भी दिन में ही होता है। प्लीज, विदाउट एक्सेप्शन, डार्क रिएक्शन ऑल्सो अकर इन द डे टाइम ओनली। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डार्क रिएक्शन देन, राइट? Why they named so? Why it is so confusing? डार्क रिएक्शन इसलिए लिखा क्योंकि इसके लिए लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं होती है। ओके, लाइट रिएक्शन के लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? सिर्फ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? ये दूसरी बात है कि वो लाइट रिएक्शन से आ रहा है, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये भी कब होता है? डे टाइम में, ये नाइट में नहीं होता है। और ये कहाँ होगा? स्ट्रोमा में, ना कि थाइलाकोइड में। प्लीज डू रिमेंबर दिस। ओके, वेरी वेल। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है। ग्रेट। नाउ एक एस्पेक्ट जो हमने अभी नहीं कवर किया, दैट इज कि ड्यूरिंग दिस photosynthesis you need CO2, correct? At the same time photosynthesis के बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 का जनरेशन होता है, करेक्ट? सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो CO2 आपको चाहिए, यानी कि CO2 प्लांट सेल्स के अंदर आनी चाहिए, एंड सेकेंडली जो O2 बना है विच इज अ बाई प्रोडक्ट, विच इज अ यूजलेस प्रोडक्ट फॉर प्लांट, उसको बाहर निकलना है, करेक्ट ना? ये कैसे होता है? सी, प्लांट CO2 डायरेक्टली एयर से लेते हैं और थ्रू द एटमॉस्फेयर वाया these tiny pores called stomata, which are present on the lower epidermis of the leaf. Okay, and through these stomata O2 जो बना है लीफ में is also going to move out, correct? So this exchange of gases, यानी कि intake of CO2 and release of O2 from leaf into the atmosphere occurs through stomata. ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन वुड बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली CO2 एंड O2। अच्छा, नॉट ओनली दिस, हम लोग देखते हैं कि जो स्टोमाटा है उसके थ्रू वाटर वेपर का भी एक्सचेंज होता है। ओके, ग्रेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट स्टोमाटा इज, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ओके, सो व्हाट यू सी हियर इज द diagram that I have made for you of stomata. Typically this is stomata of a dicot plant. ठीक है, ऑब्वियसली आप कुछ लोग पकड़ लिए होंगे अभी तक कि इसका मतलब है कि मोनोकॉट प्लांट में कुछ अलग होता है। We will see later. Great. So एक स्टोमाटा जो होता है is obviously a tiny pore. So this inside, can you see this pore? This pore is called stomata, not entire thing. Okay, and this pore, which is sometimes also referred to as stomatal aperture, ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है these two cells called guard cells. अगर guard cells नहीं होंगी तो ये स्टोमाटा नहीं बनेगा। Okay, so in the structure of stomata you find a pore in the middle which is surrounded by these two guard cells, and outside these guard cells there are 2 to 3 subsidiary cells, and outside these subsidiary cells there are epidermal cells. Okay, epidermal cells means cells of the epidermis. यहाँ पे ये cells of the lower epidermis in general. Okay, now
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा. नाउ ये जो स्टोमाटा है इसके थ्रू मेनली दो काम हो रहे हैं. पहला इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एंड सेकेंड वन इज एक्सचेंज ऑफ water vapor or rather release of water vapor. Now the release of water vapor is called transpiration, right? You must have studied that transpiration is the process of loss of water from plant in the form of water vapor, correct? So ये water vapor gaseous होता है और ये कहाँ से निकलता है? Through stomata mainly. ठीक है. तो एक चीज है, अगर स्टोमाटा खुला रहेगा तो उससे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, यानी कि ज्यादा वाटर लॉस होगा, राइट? विच इज नॉट अ गुड थिंग, करेक्ट? प्लांट जो है बड़ी मेहनत से वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल एंड इट डज नॉट वांट टू लूज इट लाइक दिस. ठीक है. सो अगर स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा. एट द सेम टाइम स्टोमाटा की ओपनिंग बहुत जरूरी है सो दैट CO2 अंदर आए, O2 बाहर जाए और फोटोसिंथेसिस हो सके. नाउ यू सी द कंट्रोवर्सी कि स्टोमाटा को खोलना जरूरी भी है और अगर आपने ज़्यादा इसको खोल के रखा तो उसे नुकसान भी है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. देयरफॉर जो स्टोमाटा होता है, प्लांट इज वेरी क्लेवर. स्टोमाटा को तभी ये ओपन करता है जब ज़रूरत हो. जब जरूरत नहीं होती है तो स्टोमाटा को क्लोज कर देता है. ओके. नाउ सी, स्टोमाटा को कब खोलने की जरूरत है? जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो. और फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब सनलाइट हो, राइट? इसीलिए इन टिपिकल प्लांट्स जो स्टोमाटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट, जब सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, उस समय स्टोमाटा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. गेटिंग इट? ग्रेट. तो ये स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि ये होता कैसे है. ठीक है. ये स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द हेडिंग कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओके. अच्छा, बिफोर दिस चलिए हम एक और बात कर लेते हैं. जैसा आप सबने रियलाइज किया था कि मोनोकॉट में और डाइकॉट में अलग अलग तरह के गार्ड सेल्स होते हैं, राइट? कैन यू सी, ऊपर आपने देखा था डाइकॉट का गार्ड सेल जो कि किडनी शेप था या बीन शेप. कैन यू सी हियर, किडनी एंड बीन शेप. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट ये जो होता है वो डम्बल शेप होता है. आई होप यू ऑल नो डम्बल, राइट? बॉडी बनाने के लिए, बाइसेप्स बनाने के लिए जिम में आप यूज करते हैं, या फिर आपने देखा होगा एटलीस्ट, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो दैट इज डम्बल. सो in case of monocot plants, that is like grasses, maize, sugarcane, है ना, wheat, इन सबों में जो लीफ पे स्टोमाटा होता है वो बना होता है ऐसे डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स का. दिस इज ओपन स्टेट एंड दिस इज क्लोज्ड. ओके. नाउ लेट्स मूव एंड सी द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होता है? सी, डू यू रियलाइज कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ऑफ स्टोमाटा, ये जो दो गार्ड सेल्स हैं ये किडनी शेप हैं. अगर इनमें आपने पानी भर दिया, ये पूरी तरह से अगर फूल गए, टर्जिड हो गए, तो इनके अंदर वाले सरफेस का, इनके अंदर वाले सरफेस, दिस इज द इनर सरफेस, ये और अंदर चला जाता है, इसका भी और इसका भी. एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा ओपन हो गया, राइट? जैसे ही इसके अंदर से आप पानी निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे, फ्लासिड हो जाएंगे. और जैसे ही पिचकेंगे ये अंदर का ये जो साइड है ये इधर पुश हो जाएगा इधर, और ये भी इधर. एज अ रिजल्ट क्या होगा? इधर और इधर आने की वजह से ये दोनों आकर के फ्लैप्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे एंड स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा. करेक्ट? सो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जरूरी क्या है? अगर ये गार्ड सेल्स में हम बहुत ज़्यादा पानी भर दें, ये बिल्कुल ऐसे फूल जाए, टाइट हो जाए, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में टर्जिड कहते हैं. ठीक है. तो अगर ये टर्जिड हो जाए तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, और अगर ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाए तो ये बंद हो जाएगा. ओके. नाउ आप ऐसा समझिए, टर्जिड एंड फ्लैसिड को आप सब लोग साइकिल चलाते होंगे या कभी ना कभी चलाए होंगे. आपने अगर टायर में हवा, ट्यूब में हवा भरी तो टायर ऊपर से बिल्कुल टाइट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्जिड. अगर हवा निकाल दिया तो टायर फ्लैट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड. ठीक है. तो अगर आपने इन गार्ड सेल्स में
पानी भर दिया, क्योंकि गार्डसेल्स में हवा नहीं भरते, हम पानी भरते हैं, ओके, दिस इज अ लिविंग सिस्टम। जैसे ही आप इसमें पानी भर देंगे, इट विल स्वेल अप, ये टर्जिड हो जाएगा एंड स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसमें से पानी निकल जाएगा, ठीक है, तो इसके जो वॉल्स हैं इसे फ्लैसिड हो जाएंगे और ये कोलैप्स कर जाएंगे एंड द पोर विल गो अवे, दैट इज स्टोमाटा इज क्लोज्ड। ओके, ग्रेट। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्कैविटी अगर इंक्रीज कर गया तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, कॉन्कैविटी अगर डिक्रीज हो गया तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। ग्रेट। नाउ एज आई वाज सेइंग कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो स्टोमाटा है वो दिन में खुला होता है और रात में बंद होता है टू कट डाउन द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हावेवर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डेजर्ट प्लांट्स। सी, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो ऑब्वियसली डेजर्ट में होते हैं जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही डिफरेंट है, करेक्ट। ड्यूरिंग डे द टेम्परेचर रीचेज अप टू 50 डिग्री, राइट। और 50 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप थोड़ी देर के लिए भी फोटोसिंथेसिस के लिए अपना स्टोमाटा ओपन करोगे तो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी वेरी हाई, है ना। बहुत जल्दी 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 वाटर का लॉस होगा और वाटर इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि प्लांट वुड डिहाइड्रेट एंड डाई, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट्स के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम ये है कि दिन में उन्हें स्टोमाटा को ओपन करना है सो दैट वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। एट द सेम टाइम अगर वो दिन में इसको ओपन करते हैं तो डिहाइड्रेशन से वो मर सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू? नाउ डेजर्ट प्लांट्स आर क्लेवर। उन्होंने क्या किया? दे फाउंड अ न्यू प्लान, ठीक है। उन्होंने एक नया मेथड बनाया विच इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन ऑफ दिस प्लांट्स टू सस्टेन इन डेजर्ट लाइक कंडीशंस। और उन्होंने कुछ ऐसा किया कि दे कैन ओपन द स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट एंड कीप इट क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। तो अब आप बोलोगे कि जब डे में सनलाइट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा और उस समय CO2 की जरूरत होगी, तो कहाँ से मिलेगा? वेरी वेल, तो वो करते क्या है, वो रात में जब स्टोमाटा ओपन करते हैं तो उस समय एयर से बहुत सारा CO2 ले लेते हैं और ले करके इसको एक एसिड के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड मैलिक एसिड टू बी प्रिसाइज, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। CO2 को मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं अपने वैक्यूल में, है ना। और दिन में जब सनलाइट आता है उस समय स्टोमाटा क्लोज है, लेकिन ये जो CO2 इन्होंने स्टोर करके रखा है वैक्यूल में वहां से निकालते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ ATP NADPH जो कि लाइट एनर्जी से बन रहा है अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। क्लेवर, राइट। इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन डेजर्ट प्लांट्स जो स्टोमाटा है वो रात में खुला रहता है और दिन में बंद रहता है। इंटेलिजेंट, राइट। So next time, do remember that plants are intelligent. They are not just uh, sitting idle at one place and सिर्फ photosynthesis कर रहे हैं. They are intelligent. Okay, great. With this, uh, let's cover the next aspect of it, whole process called nutrition. देखिए, प्लांट्स जो होते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस से उनका सारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, है ना। फोटोसिंथेसिस से सिर्फ उनको ग्लूकोज मिल रहा है एंड ग्लूकोज इज अ एनर्जी रिच कंपाउंड, प्लस वो कार्बोहाइड्रेट के नीड को पूरा करता है। लेकिन आप लोग जानते हो प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए, राइट। प्लांट रिक्वायर्स अदर एलिमेंट्स एज वेल, अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? दीज न्यूट्रिएंट्स आर मेनली nitrogen, phosphorus, sulfur, calcium, magnesium, barium, molybdenum, etc. So there are almost 16 to 17 elements, or I would say nutrients, जो कि प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, राइट। अब देखिए, इन 16 to 17 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन। ओके, नाउ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसकी नीड प्लांट की पूरी हो जाती है फ्रॉम CO2 एंड वाटर। बट व्हाट अबाउट रेस्ट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये कहाँ से मिलेगा प्लांट को? सो द आंसर इज प्लांट ऑब्टेन दिस एलिमेंट्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि सॉइल से प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, दीज आर दोस मिनरल्स, ओके।
तो सॉइल से वो इन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं बट इन देयर इनऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है, देयर इनऑर्गेनिक फॉर्म। नाउ ये सारा कुछ आप इन डिटेल में पढ़ेंगे इन 11th, बट अभी के लिए एक एलिमेंट जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज नाइट्रोजन। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नाउ नाइट्रोजन जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द रूट, थ्रू द रूट फ्रॉम द सॉइल, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन मेनली, ठीक है। नाउ नाइट्रेट आयन क्या है? नाइट्रोजन का एक इनऑर्गेनिक फॉर्म है, बेसिकली ऑक्साइड फॉर्म है, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ओके, आई बेग योर पार्डन, सिर्फ और सिर्फ नहीं, मेनली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ग्रेट। तो अब नेक्स्ट सवाल आप मुझसे पूछोगे कि नाइट्रेट सॉइल में आता कहाँ से है, राइट? तो सॉइल में हम जब यूरिया डालते हैं या अमोनिया डालते हैं तो सॉइल में रहने वाले जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, है ना, सॉइल बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, लाइक नाइट्रोबैक्टर, या फिर हम बात करते हैं एजोटोबैक्टर, ओके, या फिर हम बात करते हैं राइजोबियम, या फिर हम बात करते हैं लाइक नाइट्रोसोमोनास, ओके, नाइट्रोकोकस एटसेट्रा। ये सारे कुछ बैक्टीरिया हैं, नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सॉइल बैक्टीरिया क्या करते हैं कि सॉइल में प्रेजेंट यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट में, नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट में, या फिर राइजोबियम वगैरह अगर जैसे बैक्टीरिया हुए तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे इनटू अमोनिया और फाइनली नाइट्रेट, ठीक है। सो फाइनली सॉइल में ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब अपने आयनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एंड प्लांट थ्रू देयर रूट्स दे एब्जॉर्ब दिस मिनरल्स, ठीक है, एंड these are required for their proper growth and development, right? Now recall, अगर किसी सॉइल में इन एलिमेंट्स की कमी हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर या ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी कमी हो, तो क्या उस सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? लेकिन जिस सॉइल में इन सारे एलिमेंट्स का एबंडेंस हो उस सॉइल में प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, करेक्ट? And this is called soil fertility. When we say fertility of the soil, what we mean is कि उसमें plants कितने अच्छे से grow हो सकते हैं, और indirectly we mean is कि उस soil में ये जो particular elements हैं ये abundance में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है then soil is not fertile, अगर हैं then soil is fertile। जितना ज़्यादा abundance में है soil उतना ज़्यादा fertile है। Okay, great. So I hope you have understood the nutrition and plants. Okay, now let me take you to the experimentation part. So when you go through your textbook, that is NCERT textbook, you find there are two experiments or activities, and these two activities are related to this topic called photosynthesis. तो हम लोग सबसे पहला एक्टिविटी देखते हैं। दिस एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ओके। इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझेंगे कि या फिर ये प्रूफ करेंगे कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और सिर्फ प्लांट के वही पार्ट्स या वही एरियाज फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जहाँ पे कि क्लोरोफिल है, यानी कि जो ग्रीन कलर के हैं, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है वो नहीं कर सकते हैं, ओके। सो वी आर गोइंग टू प्रूव इट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, राइट, विच हैज़ बीन नेम्ड एज एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सबसे पहले यू टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ। Now, the first question arises is what is variegated leaf? Okay, now variegated leaf कुछ भी नहीं होता है। You all have seen money plant, right? मनी प्लांट के पत्ते को देखोगे तो कुछ जगह पे ग्रीन होता है, कहीं कहीं पे ऐसे येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, इट्स पैची,
राइट। अगर आप दूसरे प्लांट्स देखोगे, मेनली कोरोटन्स आर द प्लांट्स, वो सिर्फ लीफी प्लांट्स होते हैं जो कि लोग अपने घरों में लगाते हैं फॉर डेकोरेशन। इनमें देखोगे कि जो लीफ होता है वो कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे रेड है, कहीं पे येलो है, सो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, करेक्ट। सो देयर आर पैचेस, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे सारे लीफ को हम क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ, ओके। अब इस प्लांट को लो और आप थोड़े दिन के लिए कहाँ रख दो, डार्क रूम में। प्रिसाइसली कितने दिन एनसीईआरटी ने बोला है, दैट इज 3 days, ठीक है। क्यों ऐसा बोला, 3 days जब वो सनलाइट में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट को एनर्जी तो चाहिए, व्हाट इट विल डू, इट विल यूज ऑल इट्स स्टार्च बिल्डअप, है ना। तो पहले जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनाया था, उसको स्टोर करके रखा था, वो सारे स्टार्च को ये क्या कर देंगे, यूज अप करते जाएंगे, है ना। तो स्टोर्ड स्टार्च क्या हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। तो इस स्टेप का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम जो स्टोर्ड स्टार्च है उसको खत्म कर दें, खत्म हो गया। उसके बाद से हमें क्या करना है, प्लांट को हमें उठाना है और सनलाइट में रखना है फॉर अबाउट 6 hours, है ना। वेल ये काम आप 2 to 6 hours में कभी भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू पुट दिस प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। 6 घंटे के बाद आपको क्या करना है कि इसमें से एक लीफ को तोड़ना है, ठीक है। और ऑब्वियसली सिंस ये ऐसा प्लांट है जिसमें कि वेरीगेटेड लीफ है, तो कुछ एरियाज ग्रीन होंगे, कुछ डिफरेंट कलर्स के होंगे। आपको इस लीफ को लेना है, एक पेपर के ऊपर रखना है और जो जो ग्रीन एरियाज हैं उनको ऐसे मार्क करना है, ठीक है, ओवरलैप करके मार्क करना है, सो दैट यू नो कि कौन कौन सा प्रिसाइजली एरिया ग्रीन है और कौन सा नॉन ग्रीन या किसी और कलर का है, ठीक है। सो यू मेड दिस, ट्रेस दैट, ट्रेसिंग बना लिया अपने पेपर पे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस लीफ को लेना है एंड यू हैव टू बॉईल इट इन वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। बॉईल करना है, बॉईल करने से क्या होगा, बेसिकली जो आपका सेल वॉल है और जो प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोफिल है वो डिजॉल्व होकर निकलेगा, राइट। बॉईल करके निकाला, देन इसको आपको एक अल्कोहल सॉल्यूशन में डिप करना है, फिर वहाँ से निकालना है और इसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, एक तो अल्कोहल बॉईल होगा और फटाफट इवापोरेट हो जाएगा। दिस स्टेप विल एंश्योर कि आपके लीफ से जितने भी पिगमेंट्स हैं वो निकल गए हैं, ओके, ग्रेट। आपका जो सेल वॉल है वो ब्रेक कर गया है। अब आपको क्या करना है, अब इस स्टेप पे जब आप निकालेंगे तो जो लीफ का कलर होगा ऑब्वियसली कलरलेस दिखेगा, क्योंकि अल्कोहल और बॉइलिंग वाटर से सारा पिगमेंट तो निकल चुका है, तो कलर कैसा होगा, कलरलेस। नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू डिप इट इन आयोडीन सॉल्यूशन। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल स्टेप, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन में जैसे ही आप डिप करोगे तो इस लीफ के अंदर जहां जहां पे भी स्टार्च होगा, स्टार्च विल बाइंड विथ आयोडीन, और आयोडीन जब स्टार्च के अंदर बाइंड होगा ये एक स्पेसिफिक ब्लू ब्लैक कलर देता है, जिसको हम वायलेट कलर भी बोल सकते हैं, डीप वायलेट कलर, ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्च एंड आयोडीन कंसंट्रेशन। इसका कलर ब्लू से वायलेट टू ब्लैक तक हो सकता है, बट ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, इट इज डीप वायलेट, ओके। आपको करना है, डिप करना है, निकालना है, निकाल करके इसको अच्छे से रिंच करना है सो दैट जो भी एक्स्ट्रा आयोडीन है ऊपर से वो हट जाए, ओके। एंड देन थोड़ा सा एयर ड्राई कीजिए एंड ऑब्जर्व व्हाट यू सी कि लीफ के डिफरेंट एरियाज में ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो रहे हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, आपने जो ट्रेसिंग बनाई थी उस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर अगेन इस लीफ को सुपर इम्पोज करना है। जब सुपर इम्पोज करेंगे देन व्हाट यू फाइंड और व्हाट यू विल फाइंड मोस्ट प्रोबेबली इज जो आपका ब्लू ब्लैक एरिया है इट विल ओवरले और सुपर इम्पोज विथ द ग्रीन पार्ट, है ना, और द एरिया करस्पॉन्डिंग टू द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ वहीं पे मिल रहा है जहां पे कि आपका ग्रीन कलर था लीफ में। कुछ समझ में आ रहा है, दिस मीन्स दैट कि उसी एरिया में स्टार्च है, सी द ब्लू ब्लैक कलर रिप्रेजेंट स्टार्च, सो जो ब्लू ब्लैक कलर यानी कि स्टार्च का डिपोजिशन सिर्फ उसी एरिया में हुआ है जहां पे कि
ग्रीन कलर था, यानी कि जहां पे क्लोरोफिल था, राइट। व्हाट दिस शोज कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इज नेसेसरी, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। ओवरऑल इस पूरे टेस्ट को हम बोलते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट का प्रिंसिपल पॉइंट या क्रूशियल पॉइंट वही है कि आप स्टार्च को डिटेक्ट कर रहे हैं यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। ग्रेट। Well, it will be fun to do it if you have time. Since you all are at home this time, you can try this out. Okay, and we can discuss once we are into the physical classrooms. चलिए, विद दिस हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे चलते हैं। ये जो सेकंड एक्टिविटी है, इसका क्या मोटो है, व्हाट इज द एम? द एम इज टू प्रूव दैट फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इज नेसेसरी, ठीक है। सी, फर्स्ट एक्टिविटी का क्या मोटो था, क्या एम था? उसका एम था टू प्रूव कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो दूसरा एक्टिविटी है, इसका एम है टू प्रूव दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको दो हेल्दी प्लांट्स लेने हैं, है ना। अब प्लांट्स मतलब आप कोई भी बड़ा प्लांट मत लीजिएगा, यू टेक अ स्मॉल प्लांट इन अ फ्लावर पॉट, ओके, बिकॉज इट विल बी इजियर टू हैंडल, है ना। ले लीजिए और इन दोनों को उठाइए और आप डार्क रूम में रख दीजिए फॉर 3 days। अगेन मोटो वही है, जो भी स्टार्च है उसको कंज्यूम करना है। कर लिया? उसके बाद आप क्या कीजिए, इन दोनों प्लांट्स को आप एक बेल जार से ढक दीजिए, ठीक है। इन्वर्टेड सेपरेट बेल जार से ढक दीजिए और बेल जार यू कैन सी दिस इज इन्वर्टेड बेल जार, ठीक है, दिख रही है, दिस इज बेल जार। और इसके जो बॉटम्स हैं इनको आप वैक्स से सील कर दीजिए या वैसलीन से सील कर दीजिए सो दैट इट इज एयर टाइट। ओके, हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई एयर इसमें जाए, वरना पूरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या करना है, एक प्लांट जिसको कि हम यहाँ पे ए लिखा है एनसीईआरटी में, इस ए प्लांट, इस बेल जार के अंदर आपको एक पेट्री प्लेट या कोई भी ऐसे एक बर्तन में KOH रखना है। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरे में ये काम नहीं करना है, दोनों को बेल जार से ढकना है, सील करना है और फिर इसको आपको सनलाइट में रख देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अराउंड 2 आवर्स आप रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 घंटे के बाद आपको इसे हटाना है, बेल जार को हटाइए और दोनों प्लांट्स में से सेपरेटली एक एक लीफ तोड़िए, है ना। 2 लीफ हो गया, एक लीफ फ्रॉम प्लांट ए, द अदर वन इज फ्रॉम प्लांट बी, और उनको लेबल कीजिए सो दैट वो मिक्स नहीं हो। प्लांट ए एंड प्लांट बी का जो लीफ है उसको अच्छे से लेबल कीजिए और लेबल करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, सेम चीज़ करना है जो आपने एक्टिविटी 1 में किया था, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, है ना। यानी कि लीफ तोड़ना है, आपको उसको बॉइलिंग वाटर में डालना है, फिर हटाना है, फिर उसको अल्कोहल में डालना है, फिर उसको आपको हीट करना है, उसके बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है और फाइनली उसको ड्राई करके देखना है। ओके जब आप देखोगे देन एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आपको क्या मिल रहा है, 2 लीव्स, वन फ्रॉम प्लांट ए, द अदर वन फ्रॉम प्लांट बी, और दोनों लीफ जो है नाउ आर शोइंग सम कलर। ओके, इन दोनों के कलर को आपको ऑब्जर्व करना है एंड देखना है कि आपको क्या मिल रहा है। ग्रेट, आपको क्या मिलेगा इन मोस्ट प्रोबेबल केस, अगर आपने सही से एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको क्या मिलेगा इज प्लांट ए का जो लीफ होगा after starch iodine test will either remain colorless or it will be blue color but very faint, बहुत हल्का ब्लू होगा। जबकि जो बी प्लांट का लीफ होगा दैट विल शो डार्क ब्लू ब्लैक कलर, है ना, डार्क ब्लू या वायलेट या डार्क वायलेट कलर का मिलेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सी द बेलजार ए, इसके अंदर आपने क्या रखा है, KOH। KOH क्या करेगा, इस बेलजार के अंदर जितना भी एयर है उस एयर के अंदर जो भी CO2 है उस CO2 से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, उस CO2 से रिएक्ट कर जाएगा। सी KOH विल रिएक्ट विथ CO2, क्या बना देगा, ठीक है, कार्बोनेट।
क्या बना देगा? कार्बोनेट। सो जो भी CO2 है वो क्या हो गया? वो CO2 आपका यूटिलाइज हो गया। अब जब सारा CO2 जो भी एयर में है इनसाइड द बेल जार ए हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द KOH, तो उसमें आपको कोई भी CO2 बचा नहीं। तो प्लांट के लिए CO2 नहीं है। अगर CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लीव्स में स्टार्च का भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा। वाइल जो बी बेल जार है इसके अंदर जो एयर है उसमें अभी भी CO2 है, तो जो लीव्स हैं उनमें CO2 अवेलेबल होगा। ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, स्टार्च बनेगा, स्टार्च का एक्यूमुलेशन होगा और इसीलिए दे विल शो डार्क ब्लू ब्लैक कलर। ओके, सो नाउ यू गेट इट। सो हमने क्या किया? हमने दो एक्सपेरिमेंट किए और इन दोनों एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने प्रूव किया कि CO2 and chlorophyll both are very necessary for photosynthesis. ठीक है? However, from this video, obviously you know that there are four things which are very crucial. That is CO2, water, sunlight, and chlorophyll. Okay? So I hope now you are able to understand and uh, admire the whole process of photosynthesis in plants, and now you understand the process of autotrophic nutrition or nutrition in plants. With this, thank you. Stay tuned. We will soon be talking about the next section in this topic, nutrition, where we are going to talk about nutrition in amoeba and then heterotrophic nutrition in animals. With this, thank you. Stay safe and follow the lockdown. Thank you.